You must have thought that कि for changing my life, for becoming someone who I am not, I have to completely change myself. And which is completely true. I am telling that कि मेरे अंदर भी मुझे अपने अंदर एक belief था कि change myself who I am right now. I have to completely change like my identity, the way I look, the way I behave, the way I dress, the way I work out, like everything. And it's important to do so. Like तुम्हारी identity बदलती है. And I'm not telling that it's wrong either, but one realization I can say that कि even after doing a small change, by doing a small change, and by mean that I am saying that कि अगर तुम इन दिस कंट्री में लिव करते हो, by making a small difference, or by saying that कि by starting a small business, or doesn't matter, or starting, or by doing, working on yourself, doesn't matter, it is like कि तुम्हें कुछ huge improvements करने हैं. By doing at least 20% of improvement, you can see visible notice changes around you, because I have felt it actually. Because the reason why I'm telling is that कि I was also the one kid from, you can say that कि average kid from my childhood, who was the skinny, who was having decent looks, who was the shy introvert and couldn't speak to anyone. I was also in the same place. अगर मैंने अपने आप पे एक्शन नहीं लिया होता, आई वुड हैव रिमेन द सेम किड हैज आई वाज इन माय चाइल्डहुड. आई एम नॉट टेलिंग दैट कि ही इज रॉन्ग, बट उसके पास अवेयरनेस नहीं थी, उसके पास इनफ नॉलेज नहीं था, एंड दैट्स व्हाई ही फेल्ड. एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, बिकॉज आई गॉट द नॉलेज, एक्चुअली. सो बीइंग दैट केयर एक्चुअली एंड टर्निंग माई सेल्फ, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरा मास्टर अप कर दिया, मैंने अपने लुक्स को मैक्सअप कर लिया, मेरे पास 6 पैक्स एप्स है, मेरे पास 6 फिगर्स का बिजनेस है. नो, आई डो नॉट हैव नथिंग. आई एम टेलिंग दैट कि उस जो भी मैंने अपनी एरियाज ऑफ लाइफ में, आई कैन सी दैट कि हैव मेड जस्ट 10 to 15, और यू कैन से 10 to 20% ऑफ इम्प्रूवमेंट, not more, not less. And by doing it such, I have seen the visible changes that people behave around me. I could see in my home only actually, like मैं जब मैं अपने घर में रहता था, तब मैं अपने बचपन में, the behavior of me, of my friends, of my known people was different, and when I'm right now is completely different. Why you say so? Because people do judge actually. And through this video, I want to just share and think that ki, I'm not telling you to make a small improvement and be happy with it. I'm just telling that ki, even if like it's a given motivation for you, that ki, even making a 20% change in my life, I have seen some visible changes, and which is really boosting up me for me to go forward ahead, like to become top 1%. And सो माई मेन मोटिव हियर, आई एम सेइंग दैट कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, कुछ ना कुछ, लाइक यू वांट, यू हैव एन ड्रीम, यू हैव एन एक समथिंग यू वांट टू अचीव, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर इट. एंड आई एम सेइंग दैट कि तुम्हें कुछ पहाड़ को उल्टा करना है, तुम्हें कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करनी है, तुम्हें क्लाइंब करना है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि it's okay if you have that kind of dream to become 1%, but some people do not have it, and I'm okay with it. But I will always insist on you that you always try to become that ideal perfect version of yourself who you want it to be. क्योंकि उस चक्कर में तुम अपने आप को, you will find yourself, and somewhere I can say that I found myself chasing that perfect version who I thought that who will be really have good looks, who will be good in studies, who have 6 packs apps, who is being great in business, who is doing coding well, who is best in sports. No, I'm not telling a sub area of life. I'm not at, not even at peak level. I'm just like, you can say that a small change. You can say that the beginner level पे change आता है 20%. मैंने उतना ही अचीव किया, and that's what I needed the most actually. मुझे लगता था कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा, but no. For so I was chasing the perfect ideal version, and तुम भी चेज करते हो, and it's good actually. So उस चेज के अंदर I think that I found myself. I am really happy that I found it myself. Like now I can say that I will say the differences between who I was and who I am right now. So before I was that kid who doesn't know how to speak with people, who doesn't know how to communicate with people. नए नए लोगों से बात कैसे किया जाती है, दोस्त कैसे बनाया जाता है, कैसे पॉपुलर बना जाता है,
he was not actually really good looking at all. He was just, you can say that average kid, like who is good at studies, you can say, but not in other aspects of him. But now I can say that कि मैंने अपनी communication skills को improve किया है. I've started my content creation journey. Also have started working on myself, like going to gym. Also focusing on my looks part, and also I'm making sure that कि मैं अपने आप को self knowledge do through skills, through books, through content, through courses वगैरह. And there are many more things I'm trying to improve. एंड देर इज़ अ वे लॉट ऑफ डिफरेंस. यू कैन सी दैट कि मैंने अपने जो पुराना वाला वर्जन था एंड आपका जो वर्जन हो, लाइक इट्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर इट. सो माई मैसेज फॉर यू विल बी दैट कि do not ever be considered demotivated thus that you do not have changed that ideal version. You should be going for that version to become like, तुम्हारा एम होना चाहिए कि मुझे उस वर्जन को रीच आउट करना है. बट उस रीच आउट करने में डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड. वाई? बिकॉज मोस्ट पीपल गेट डीमोटिवेटेड एंड स्टेप ऑफ द जर्नी दे वांट टू चेंज. इवन आई एम ऑल्सो चेजिंग माई ड्रीम वर्जन, लाइक माई फ्यूचर वर्जन हु आई वांट टू बी. एंड उस स्टेज के अंदर आई हैव बिकम समवन हु आई वाज नॉट कंप्लीटली इन द पास्ट. एंड व्हेन आई when I gained that awareness, when I look like a third perspective से अपने आप को अपनी सराउंडिंग को देखा, there was a hell lot of difference. I have seen like कि there were stories about like जो gossips होते हैं ना कॉलेज के अंदर, तुम्हें मालूम होगा, उसके थ्रू मैंने अपने आप को सुना है कि यार there is a hell lot of difference. Like I can say that कि मुझे कुछ proof evidence मिले that makes me proof that makes me 100% sure that you not like by making a small percentage of change, I have achieved a lot of things. I'm not saying that I'm happy with it. I'm just saying that it gave me like the external validation. It's like a bonus gift for me. Like I got that gift and I'm using it for motivation so that कि मैं अपने काम पे और ग्रो कर सकूँ. मैं अगर 20% पे इतना बेटर कर सकता हूँ अपने एरिया ऑफ लाइफ में, थिंक माई फ्यूचर वर्जन हु इज एट द पीक लेवल, हाउ ही विल परफॉर्म. And that gives me goosebumps, and I'm working on that way only actually. Some days I might fail, some days I might not do work, but it's okay. उस चेज के अंदर, उस चेजिंग के अंदर, उस लाइक उस वर्जन को तुम जब चेज करते हो ना, द रियल वन इज बोर्न इनसाइड यू, द वन हु इज really born in this world to make something big. So I will suggest you that कि do not get demotivated by saying that कि मैंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया. बस मेक श्योर that कि एम बड़ा रखो. उस जो जर्नी होगी, तुम उस वर्जन को अचीव करने के लिए जो तुम हाथ पैर दौड़ोगे, नहीं तो कुछ मेहनत करोगे, नहीं तो any kind of step you will take for to reach that version. I will say that कि whenever you reflect back उस वर्जन को चेस करते हुए तुमने देखा है ना, you always will be grateful and you always will be grateful. You will never regret that कि मैंने कुछ मेहनत की थी. People never regret that कि उन्होंने मेहनत की थी उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में. इवन इफ आई टेक माइंड एज एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने 11-12 डेज पे 11-12 स्टैंडर्ड के बेसिस पर अगर मैंने JEE के लिए जो मेहनत की थी, आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड फॉर JEE NIT एग्जाम. मतलब मैंने हर NIT कॉलेजेस में एडमिशन मेरा नहीं हो पाया, बट वेन एवर आई लुक बैक टू द वर्क आई मेड, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर इट because it saved me who I was actually, and that is what I needed the most. So you are just, I feel like 1-2 steps behind changing your, or you can say you are just one step behind making a lot of change. So go forward and do that thing, because the time is limited. We do not have an unlimited lifespan so that we can achieve कर सकते. The we have only certain age, we have some certain time, and that is what makes it special. So go after it, reach after it, doesn't matter what it is, because at the end regret नहीं रहना चाहिए बस. That's what I mean, that's what I think. So take action and see what the changes you will feel after trying, if you are trying to reach that version who you want it to be. Go after